So the next topic is population interaction. Interaction means between the relationship between the organism. Every organism depends on other for their food. So the food chain takes place. Every organism food autotrophs, and there are two type of organisms, autotroph and heterotroph. Autotroph make their own food, so herbivorous depends on their food on the autotroph. So one species, in this interaction we will learn about the different species of a population depends on each other for their food. So this interaction takes place a balance of the earth. It's very essential process for balancing on the earth. So here there are two type of interaction, interspecific and intraspecific. Interspecific is the interaction between the different species, and the intraspecific interaction is between the same species. Same species means, for example, intraspecific means human का human से interaction, और interspecific is different, the human का plant से animal से interaction या relation. तो दो different species के बीच interspecific और same species के बीच intraspecific. There are the combination population of two species may interact with the environment, and each organism in correspond the combination of natural and negative. There are the interaction between the organisms. There are three types: positive, negative and neutral. What is the mean of the positive? Positive means the two species, the organism in which the interaction takes place, they both are beneficial. When we denoted by the positive or a plus sign, and when the negative interaction, if it is a positive or a plus. When the species is harmful to interaction is harmful to any one species, so it is denoted by the negative or the minus. Or when the species is not a beneficial and not a harmful, it is a neutral. Our three combinations are here: plus plus denoted by the positive, means both interaction of the two organisms are beneficial for each other. The negative means harmful to both, and here the one is beneficial and one is harm. One is the interaction for one is positive and the negative means harmful. Table of interactions is here. The effect types of interaction: effect on species 1 and effects on species 2. कोई भी इंटरेक्शन होगा, कोई भी रिलेशन दो ऑर्गेनिज्म होगा, अब वेदर दे आर द सेम स्पेशीज और अ डिफरेंट स्पेशीज. नेचुरल रिलेशनशिप 0-0 मीन्स कोई नेचुरल रिलेशनशिप में ना कोई बेनिफिशियल है ना कोई हार्मफुल है, न्यूट्रल है ये प्रोसेस. कॉमनलिज्म इफेक्ट एक स्पेशीज के लिए प्लस यानी बेनिफिशियल है और अदर स्पेशीज not a beneficial or not a harmful. Mutualism, both species are beneficial to each other like a lichen. Interspecific competition, both species are harmful. देखें competition होता है तो दोनों competition में, लड़ाई में दोनों मारे भी जा सकते हैं, तो these are the harmful to each other. predation मतलब शिकार. जब शिकार करते हैं तो एक को तो फूड मिलता है और दूसरे को मारा जाता है. So one is beneficial and other is harmful. Parasitism, same as one organism is beneficial and the other is harmful. Predation,
First है predation. Predation is a interspecific interaction where the predator kill the consumer or prey. Predation में prey एक को हार्म होता है और दूसरे को बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक दूसरे को अपना फूड बनाता है. तो वन ऑर्गेनिज्म इज अ प्रीडेटर एंड अदर इज अ प्रे. तो प्रीडेटर इज बेनिफिशियल एंड प्रे इज अ हार्मफुल बिकॉज फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी herbivores, when the cows eat grass, the grass means other interaction between the cow is beneficial and grass is harmful to the one species is beneficial and other is harmed. जो प्लांट्स थे उनको हार्म हुआ क्योंकि वो तो खत्म हो गए, और जो काऊ गोट जिसने भी वो फूड लिया ग्रास ली वो बेनिफिशियल हो गया. तो प्रीडेटर्स, प्लांट्स हैव डिफरेंट अडेप्टेशन प्रिवेंट अटैक टू द प्रीडेटर. प्रीडेटर पर प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं. मीन्स द केमिकल्स, दे रिलीज केमिकल्स, दे रिलीज लेटेक्स, दे हैव द स्पाइंस और दे हैव द बिटर टेस्ट. तो दे प्रोटेक्ट द अदर. जैसे देखे कि जो लेमन है, ऑरेंज है, उनके में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं. जब एनिमल्स उनको खाते हैं तो सबसे पहले ऑयल जाती है, उससे उसका टेस्ट तीखा होता है तो वो उनको नहीं खाते. तो बहुत सारे प्लांट्स में ये इस तरीके के प्रोटेक्टिव और उन्हें खुद को सेफ रखने के लिए ऐसे नेचुरली वो अपने आप को सेफ रखते हैं. द सेकेंड इज पैरासिटिज्म. Parasitism, a parasite which the organism lives on depends on other for their food and shelter. So one is fish shelter like a liver fluke, tapeworm or the lice in the hairs. So the lice is a beneficial because they take our food from our blood. So this is but we are this process is harmful to us. So one is beneficial and one is harm. These are two type of organism parasites. Ectoparasite lives on the outside or a surface of the other organism. Lice is a ectoparasite, बाहर दिखाई देते हैं lice. And the endoparasite lives inside the body like a liver fluke in a liver and tapeworm in a intestine, or bacteria or virus lives also inside the body. So the bacteria, virus, liver fluke are also beneficial to us, but these are harmful to us. Commensalism, one species beneficial and other is neither harmed and nor beneficial. Nor benefited. An orchid growing on a epiphyte on a mango branch at the commensalism. Orchid mango plant पर grow करता है. This is a commensalism. तो देख रहे हैं ऑर्किड जो मैंगो प्लांट पर ग्रो करता है, किसके लिए? सनलाइट के लिए. सनलाइट के लिए वो ऊपर जाता है, पर वो मैंगो प्लांट के लिए ना बेनिफिशियल है और ना हार्मफुल है. लेकिन इससे ऑर्किड को उससे सपोर्ट मिल रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उससे क्लाइंबर है. तो ये ऑर्किड सनलाइट के लिए, तो ऑर्किड तो बेनिफिशियल है. मैंगो इज नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल. Mutualism is an interaction between the both species are beneficial to us. In the earlier classes 11th or 9th you have learnt about the lichen and mycorrhiza.
Lichens are the symbiotic association between algae and fungi. Algae and fungi, algae have the chlorophyll and provide food to the fungi. Because the fungi does not have the chlorophyll, they depend on other for their food. In place of food, the fungi provided water and minerals to the algae part. So both algae and fungi both are beneficial to each other. The other is the mycorrhiza. Mycorrhiza is the relation between the fungi and higher plants. In 11th you have learnt about the gymnosperm. The root of all the gymnosperm have the symbiotic association with the coralloid root or the mycorrhiza. Relationship between the mycorrhiza, myco means fungi and rise higher plants, the roots of the higher plants mean gymnosperm. जिम्नोस्पर्म के प्लांट में फंगस के साथ रिलेशनशिप माइकोराइजा होता है. फंगस अगेन से दे डिपेंड फूड फॉर द प्लांट higher plant, and higher plants fungi provide to the higher plants the nutrients and water and मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू देयर रूट्स को उनकी स्ट्रेंथ प्रदान मजबूती प्रदान करता है और जो है उन्हें फूड और उन्हें वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है. एमेंसिलिज्म, it is a relationship one species is harmed and other interacting species is neither harmed or the benefit. Amencilism, the one species is harmed. Commensalism, one species is beneficial, other is neither beneficial or harm. But amencilism, one species is harmed, एक को तो नुकसान होगा ही होगा और दूसरे को ना नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा. So this is there are type of the interaction. Population interaction, there are different type of interaction we have learned. Commensalism, parasitism, predation, amencilism, mutualism.